Hello everybody. Today we will be focusing on a new topic. Today's topic for discussion is functions of management. Mainly we will be focusing on planning function. Under this topic we will be concentrating on three topics, mainly definition of planning, characteristics of planning and importance of planning. So actually what is planning? Every day in day to day activity, day to day work, we all hear about, we plan for smallest things. It might be our marriage, it might be our day to day activity, it might be for schools. But what actually is planning? So from definition we will see it. Planning is the fundamental management function which involves deciding in advance what is to be done, who is to do it, when it is to be done, how it is to be done. So from the definition we can focus on some words such as fundamental management function, deciding in advance, who is to do it, when is to be done and how it is to be done. By fundamental management function, we understand that every procedure, every process of management, it might be general management, it might be specific management, it might be day-to-day management, it might be top-level management. Every such type of management requires planning. So, planning is a fundamental management. What does it cover? It covers that we are deciding in advance what is to be done. Means if sometimes a specific activity is given in future, जैसे कि हमको कुछ काम 10 दिन बाद करना है, तो आज ही इन एडवांस में आज ही मैं वो तय करूंगा कि 10 दिन बाद मुझे क्या काम करना है. सो सेकंड इज व्हाट इज टू बी डन, हु इट इज टू बी डन, व्हेन एंड हाउ. वो काम कौन करेगा, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ए ब्रॉडर कंसेप्ट सच एज fundamental management function, deciding in advance when, how, where and who. So nextly we will be seeing the topics such as characteristics of planning. What planning actually is, what are the characteristics of planning. First we will see it is a managerial function. Planning is a managerial function. It means that every management has to go for a plan. It be short plan, long plan, low level management plan, higher level management plan. So it is the basic function of management. So it is a management function. Secondly, it is prime activity. Prime activity means every other activities of organization such as staffing, directing, controlling, all other activities are followed by planning. मीन्स पहले प्लानिंग आता है, उसके बाद ही बाकी सब टॉपिक्स आते हैं. इसलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज ए प्राइम एक्टिविटी. थर्ड, गोल ओरिएंटेड. प्लान हैज ए पर्पस फॉर एक्टिविटी. गोल ओरिएंटेड मीन्स every organization, every function focuses on some specific goals to be achieved. Example, if a company produces ice creams, so they plan for summer season that in during summer seasons nearly 4 months we have to produce 10,000 candies of ice cream. So they are focusing on a goal that कि एक 3-4 महीने के अंदर मुझे 10,000 आइसक्रीम की कैंडीज बनाने हैं. इसलिए हम उस गोल के ऊपर हम सब अपना फोकस करेंगे और इस गोल को अचीव करने के लिए हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इंटेलेक्चुअल का मीनिंग होता है माइंड. एवरी प्रोसेस सच एज प्लानिंग is not implemented directly. Either it is a thought in mind or it is written on a paper. So intellectual means a thinking which requires decision making, with brain thinking, superlative thinking, and which has a greater importance of decision making. Decision making. Every plan has a specific activity such as various decisions are to be taken in an organization, from daily activities to the final functions.
every organization focuses on decision making. So decision making is a very important topic. Decisions of day to day activities are taken, and it has to be taken either by the top management or the middle level management, and every planning function considers decision. So planning mainly focuses on deciding what is to be done in advance. So decision making also comes, it is a part of planning process. Next is flexibility. Flexibility means some provisions. If you are deciding a plan, there are some chances that that plan might not be followed. So the executives or the subordinates are given some chances that they can make some simple changes in the plan. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक एक्टिविटी दी गई हो और बिकॉज ऑफ सम रीजंस उस एक्टिविटी को आप क्लियर कटली 100% उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये इतनी अथॉरिटी, इतनी राइट्स आपको दी जाते हैं कि आप उस राइट्स को उस राइट्स का इस्तेमाल करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो. इसको मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबल मीन्स you have the chance for going by your own decisions for some part of it. Nextly, we will be focusing on the importance of planning. Importance मतलब अब क्यों प्लानिंग क्यों जरूरी है और या फिर प्लानिंग किस लिए करना है. So what are the uses, importance, and mainly why should we plan? We will be focusing on it. Improve future. It improves future. It improves future. Any activity which is to be done, first of all we cannot directly go. Example, we will take example that we want to a production company produces 10 lakh bicycles. So without planning, if the company manager or the CEO says go and produce 10 lakh bicycles, and if that decision goes wrong, so there will be a large amount of losses with company will be facing. So in such conditions, directly implementation is not possible. So it improves function. It improves function. It gives a plan for us so that the future function can be decided by that plan. Second is minimizes risks. Whether smallest unit or largest unit, first of all, every business activity, every organization has some sources, some type of risk. So if we plan in advance, that risk would be tackled. Example, if a manager wants to sell raincoats in rainy season, so he has to plan how many raincoats I have to sell in 3 to 4 months. So for planning, if he directly goes and stitches 10 lakh raincoats, and if he is not able to sell that raincoats, the company may face a lot of problems. So to avoid such risk and uncertainties, firstly we will plan, and that plan will be executed. So planning mainly helps in reducing risk and uncertainties. डायरेक्शन फॉर एक्शन. डायरेक्शन फॉर एक्शन का मतलब है कि हम अब क्या करेंगे. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजरियल लेवल्स पे लोग काम करते हैं. उनके अंडर भी सबऑर्डिनेट्स, जो सुपरवाइजर्स के अंडर हेल्पर लोग सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं. तो उनको कि हम अब आगे क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें, इसके लिए उनको मैनेजर से डिसीजन लेना पड़ता है. तो ऐसे कंडीशंस में planning helps to improve the direction for action. Mainly the manager directs what is to be done. So if we plan, every activity is written or it is stored in management information system, and that planned activity is actually implemented, and a directional level is given by the top management to the subordinates and the low level management. So planning helps a lot in giving the direction for the employees. Provides standard for control. What is standard? Actually, what standard means? If a person is working for 1 hour, and during that 1 hour
he is producing 10 ice creams. So in 1 hour, a standard means in specific time, specific motions, in 1 hour he'll be focusing on 10 ice creams. He might be going for 12, he might also be going for 8, but he has some future कि मुझे आज 1 घंटे में 10 आइसक्रीम्स बनाने ही है. सो एक घंटे के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी बनाए, पर मिनिमम हिज फोकस इज ऑन 10. सो प्रोडक्ट्स क्वालिटी वो कम भी नहीं होगा, और प्रोडक्ट वो ज़्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट वो भी नहीं बना सकता है. उसको कहते हैं स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड से कम भी हो सकता है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. जितने भी रिसोर्सेस, जैसे कि फाइनेंस वाले फाइनेंस देते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए. टेंट, गाड़ी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोडक्ट चाहिए. दैट रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड इन ए प्रॉपर वे. यानी अगर किसी भी एक्टिविटी आपको पहले करनी हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे चीज़ कंपनी से लेना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन से लेना पड़ता है. अगर समझो कि आपने बाइसिकल्स को 10 बाइसिकल्स एक दिन में बनाने हैं, इस चीज़ के लिए आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ चाहिए. बाइसिकल्स के यूनिट्स चाहिए, बाइसिकल्स के पार्ट्स चाहिए, बाइसिकल बनाने वाले एम्प्लॉय चाहिए. ऐसे में अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, तो ही आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर आप नहीं करते हो तो वो ज़्यादा वेस्ट होगा, कंपनी आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो लॉस होगा. इसलिए अगर आप प्लानिंग प्रोसेस अच्छी तरह से करते हैं, तो इट विल बी यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द कंपनी. सो फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक्स, स्पेशली फंक्शन ऑफ प्लानिंग, we come to a conclusion that planning is the first process. Planning is the must process. Without planning, no organization will be able to survive in the market. Planning is the base for all management functions. Thank you.